Assalamualaikum. In this video we are going to discuss all about anesthesia, and I will tell you everything you need to know about anesthesia first in this video, and then in the coming videos we will be discussing all the types of anesthetic agents, inhalational as well as the intravenous agents. Now first of all, starting from anesthesia, what is anesthesia? So first of all, you should know that anesthesia is characterized by unconsciousness, analgesia, amnesia, skeletal muscle relaxation, and loss of reflexes. So discussing all these characteristics, first of all you need unconsciousness. Obviously when you are giving a patient general anesthesia, he must be unconscious, and there must be analgesia, amnesia. Why should be there amnesia? Amnesia should be there because we want के पेशेंट को जो अनफेवरेबल मेमोरीज़ हैं ऑपरेशन की या सर्जरी की वो उसमें ना रहें. सो देयर शुड बी एमनीजिया. एंड skeletal muscle relaxation. Why there should be skeletal muscle relaxation? Because when you are operating and you are giving an incision and you need to retract the muscles, retract the skeletal muscle, there should be skeletal muscle relaxation. If the skeletal muscles are not relaxed, it would be difficult for a skeletal muscle to retract and making the surgery difficult. So there must be skeletal muscle relaxation, as well as the loss of reflexes. During operation, when you need a general anesthesia, so the reflexes should not be there, because if you think about one reflex, like take any example of the reflex, like you can say regurgitation reflex, or whenever there is vomiting effect or irritational effect, so the aspiration can be there, and when aspiration is there, it causes aspiration pneumonia. So reflexes should not be there when you are giving a patient general anesthesia and performing a surgery on it. So this is all about the characteristics of anesthesia, general anesthesia you need to know. Now the types of anesthesia, you all know that inhalational anesthesia and intravenous anesthesia. So we are done with the types and characteristics. Now what is the mechanism of action? Actually there is no clear mechanism of action of the anesthetic agents, but there is a proposed mechanism of action. You can see that there are two possible ways कि एनास्थेटिक एजेंट्स जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं. या तो जो आपका इनहिबिटरी मैकेनिज़्म है उसको वो पोटेंशिएट कर दे, जैसे कि गाबा अल्फा रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करे और उनको पोटेंशिएट करे आपके इनहिबिटरी एक्शन को, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी एनेस्थीसिया. या तो फिर जो आपका एक्साइटेटरी सिस्टम है, जो ग्लूटामिनर्जिक सिस्टम है, उसको वो इनहिबिट कर दे. और इनहिबिटरी एक्शन जो ग्लूटामिनर्जिक के थ्रू एक्ट कर दी है, दैट इज़ हैलोथिन. और बाकी जितनी भी आपकी ड्रग्स हैं, लाइक यू कैन सी हेयर, ये सारी ड्रग्स जो आपकी बड़ी हैं यहाँ पे, इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं, बारबिचुरेट्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, एटोमिडेट है, प्रोपोफोल, ये फैसिलिटेट करते हैं गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड, गैबा अल्फा को, और इस तरह ये एक्ट करते हैं. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ऑलमोस्ट ऑल दी अदर ड्रग्स अदर देन दिस हैलोथिन, सॉरी ketamine was, I was confusing it with halothane. Ketamine is actually acting through the glutaminergic pathway. It inhibits the glutaminergic pathway, in other words excitatory pathway को inhibit करती है और inhibit करके act करती है. बाकी सारी जितनी भी हैं वो act कर रही होती हैं through GABA pathway. So GABA को या तो आप potentiate करते हो या फिर आप inhibitory, आपको जो excitatory system है उसको inhibit कर देते हो. So these are the two possible mechanism of actions through which general anesthetics can act. Now what do you need to remember कि ये जो एक्ट करते हैं, जो आपका पेन पाथवे है उस पर ज़्यादा एक्ट करते हैं देन द रेटिकुलर फॉर्मेशन. मिड ब्रेन के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा हुआ है. तो अगर तो इसका इफ़ेक्ट वही, हमें क्या चाहिए, पेन के पाथवे को हमें इन्हिबिट करना है ताकि एनाल्जेसिया और एनेस्थेटिक इफेक्ट्स आएँ. सो हमें वो इफेक्ट ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑन द रेटिकुलर फॉर्मेशन. सो दिस इज़ हाउ दीज आर एक्टिंग कि आपकी जो CNS की डिप्रेशन है या मेडलरी डिप्रेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, वो बहुत बाद में जाके होती है, जबकि आपका पेन की जो इनहिबिशन है, पेन पाथवे की इनहिबिशन आपकी पहले हो जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट mechanism of action. Now what are the protocols? So next heading is protocols. So what are the protocols you are going to follow
और हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आपने पेशेंट को जो है वो एनेस्थीसिया देना है, कौन सा एनेस्थीसिया देना है, उसको लोकल एनेस्थीसिया देना है, उसको रीजनल देना है, या फिर उसको जनरल एनेस्थीसिया देना है. सो दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द पेशेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को माइनर सी सर्जरी करनी है, उसको एक छोटा मोटा कट लगा हुआ है कहीं पे, आपने उसको सूचरिंग करनी है, तो वहाँ पे आप सिर्फ क्या करोगे, लिग्नोकेन के इंजेक्शन लगा देते हो, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हो, दैट्स इट. सो अगर आपने किसी की बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी करनी है तो आप उसको क्या करते हो, या तो इंट्रावीनस दोगे या फिर इनहेलेशनल दोगे. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू गिव द पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया और लोकल रीजनल. सो दैट्स इट. और इसके अलावा यहाँ पे एक और बात लिखी है कि आपने कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है थ्रू EEG. सो यू नो कि EEG इज़ एक्चुअली गोइंग टू मॉनिटर द ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. सो quantification of the anesthetic effect is also checked by monitoring through the EEG. So we are done with all these headings like anesthesia, characteristics, mechanism of action, protocols. Now the most important thing regarding SCQ point of view is stages of anesthesia, right? So stages of anesthesia, first of all there is stage 1 which is analgesia, stage 2 disinhibition, stage 3 surgical anesthesia, and stage 4 is medullary depression. So we will discuss these one by one. और जो बुक में बात नहीं लिखी हुई वो भी जो बिग कैटजंग से है, और ऑब्वियसली अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है टू डू फ्रॉम बिग कैटजंग, सो आई आल्सो हैव दैट, सो आई विल टेल यू राइट हियर. So analgesia, obviously first effect we want to perform a surgery, we know there must be analgesia. So decreased awareness of pain, sometimes with amnesia. Like I told you amnesia is required. We don't want the patient to remember the painful or the unwanted experience of that surgery, so there should be an amnesia. Consciousness may be impaired. इसमें consciousness impaired होती है लेकिन loss नहीं होती, मतलब patient जो है वो अभी उसको मतलब वो अभी unconscious नहीं होता. He can, I mean you can see the surroundings and aware of the surroundings, but he has the analgesic effect. Now the disinhibition is the second stage, which is I will tell you the most dangerous, and I'll tell you why it is most dangerous, although it's not written here. But the stage 2 in which there is a delirium, and this is the stage of excitement, and there is amnesia. Obviously reflexes are enhanced and the respiration is typically irregular. Respiration becomes irregular because of reflexes, and rationing and incontinence may occur. So why is this the most dangerous stage of anesthesia? It is most dangerous because in this stage there is excitement, and when there is excitement there are increased reflexes. I told you in the beginning that there should not be reflexes. In the characteristics I told you there should be loss of reflexes, but in the stage 2, which is actually not that longer stage, it just lost for a moment or two. So this is the most dangerous, but it is dangerous. Like you can see कि अगर reflexes यहाँ पे activate होगी, एक reflex को यहाँ पे example के तौर पे ले लो, you can say कि जो आपकी cardiac reflexes हैं अगर वो activate हो जाती हैं इसमें, तो what will happen, there would be tachycardia which can be dangerous, right? So this is the most dangerous stage because of reflexes which are increased as well as excitement. Now the next stage is surgical anesthesia. ये स्टेज यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा बहुत इसमें लिखा हुआ है, मैं इसमें प्लेन्स हैं कुछ, वो भी आपको बता दूंगा. लाइक स्टेज 3 इज़ स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस. देयर इज़ नो पेन रिफ्लेक्सेस, देयर इज़ रेस्पिरेशन इज़ वेरी रेगुलर एंड ब्लड प्रेशर इज़ मेंटेन्ड. बट एक्स्ट्रा थिंग इज़ देयर कि आप स्टेज 3 की 4 प्लेन्स हैं. देयर आर 4 प्लेन्स ऑफ स्टेज 3 जिसको आप असेस करते हो फ्राम द मूवमेंट ऑफ आई एज वेल एज द आई रिफ्लेक्सेस. Right, so I have written these stages and the planes of stage 3 anesthesia. Plane 1, in plane 1 there is light anesthesia, ठीक है. और इसमें जो आँख को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ब्लिंकिंग मूवमेंट होती हैं, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं और रेस्पिरेशन रेगुलर होती है, ठीक है. जब प्लेन 2 आती है, स्टेज 3 ऑफ जनरल एनेस्थीसिया की प्लेन 2, इसको बोलते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया. इसमें आइज़ जो हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं, पिपल्स फिक्स हो जाती हैं, रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाती हैं, और जो रेगुलर ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर रेगुलर एंड रेस्पिरेशन इज़ रेगुलर. इन प्लेन 3
of the stage 3 of general anesthesia, it is deep anesthesia, ठीक है. और जो intercostal muscles हैं, it is actually the deep anesthesia. You can see कि type plane 3 is deep anesthesia, जिसमें obviously reflexes loss हो जाती हैं और anesthesia goes to the deep. और जो plane 4 है, this in plane 4 of the stage 3 of general anesthesia, intercostal muscles are paralyzed and shallow abdominal movements and shallow breathing, and the pupils are dilated. Pupils become dilated. So this was all about the stages of the anesthesia. So in this video, I guess we are done everything about anesthesia. We needed to know what is anesthesia and what are the stages of anesthesia, what are characteristics of anesthesia, what is mechanism of action, and what are the protocols you are going to follow for the anesthesia. Protocols mean आपको किस पेशेंट को कौन सा anesthesia देना है और कैसे देना है, सही है. तो this is what we have discussed in this video. So we will do inhalational anesthetics in the next one. Thank you so much.